चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी आप बुलाते रहना। सो दिस विल बी योर लास्ट यूनिट, unit 5. Okay, and this is entrepreneurship, which is really required to you after getting pass out. It's almost 1.5 to 2 months to get pass out. Now this is really a required one from your side. So let us understand what is entrepreneur and entrepreneurship. Today we'll go through its definitions, concepts, the classification or types, we can say, the characteristics, why it is important to us, and what is the difference between entrepreneur and manager. Okay, so okay, so first of all let us see what is the definition of entrepreneur, what entrepreneur is all about, and what is entrepreneurship exactly. Basically entrepreneur जो होता है डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, नेशन की, अपनी की रोल प्ले करता है इकोनॉमी को बिल्ड करने में, using the skills which he or she has, or initiatives which are necessary to anticipate the needs, and some bringing some new ideas, new products, in the form of new products to the market. Okay, so that ways entrepreneur provides uh, new things or new inventions or new products or enhanced products to the customers. So this way it brings the resource, it increases the resourcefulness in the market. Like nowadays we totally are dependent upon gadgets. Okay, अभी मेरा फोन भी खराब चल रहा है, मेरे बेटे की क्लासेस भी नहीं हो पा रही, so we are totally dependent upon these gadgets because we are sitting at home and virtually taking classes and receiving classes virtually also. So we need to purchase those gadgets. So इस तरह की नई नई गैजेट्स या कुछ नए प्रोडक्ट्स मार्केट में एंटरप्रेन्योर्स लाते रहेंगे, देन एंड ओनली देन मार्केट में रिसोर्सफुलनेस बनी रहेगी फॉर अ एंड यूजर. नाउ दैट entrepreneurship has to prove to be successful by taking some risk and by creating the startups so as to get the rewards, profit, fame, and certain growth opportunities also. So this is the only difference between the job seeker or a businessman or a entrepreneur, जिसको हम entrepreneur कहते हैं. So this, तो इसमें ये सारी चीजें हैं, but you need to take some certain risk with a calculative idea and having एक हिम्मत के साथ स्टार्टअप करना, that is really the required one. That is the real required one. Okay. Now, entrepreneurship sometimes results in losses also. Sometimes, existence जो होता है entrepreneurship का कई बार कम भी होता है because it has both the ends. एक positive end है और एक उसका negative तो नहीं बोल सकता because every failure gives us certain lessons so that अगला failure ना हो पाए, या ऐसे series of failures हो सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में. और ये भी हो सकता है कि आफ्टर सर्टेन फेलियर सीन्स some may things may occur because nobody were किसी को पता नहीं था इस तरह का कोरोना या इस तरह की कोई बीमारी आएगी जो ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी को हैम्पर कर सकती है. एंड उनके बारे में एक बार सोचिए जरा, जिन्होंने अपना बिजनेस कोरोना से जस्ट 15 दिन, एक महीने पहले कुछ आइडिया लेके, कुछ मनी लैंड करके, कुछ अपना सेविंग जमा करके किया होगा. तो देयर कैन बी दिस काइंड ऑफ अनसर्टेन सिचुएशंस जहां एंटरप्रेन्योर्स फेल हो सकते हैं या सिचुएशनल फेलियर्स आएंगे.
ये ऐसे फेलियर्स नहीं है कि जो बिना जजमेंट के काम किए गए हैं, क्योंकि इस तरह की बीमारियां जो है दैट कम्स अंडर नेचुरल कैलेमिटीज। तो इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज है तो नोबडी कैन प्रिडिक्ट दीवन। सो इस तरह की फेलियर्स जो है वो इस तरह के फेलियर्स या कुछ और तरीके की फेलियर्स होते हैं जिसके कारण मार्केट फेल हो रहा है, तो वो कुछ लर्निंग्स दे जाते हैं व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, एंड बिजनेस को किस एंड से हमको लेके जाना चाहिए, बिजनेस से हमको किस एंड पे लेके जाना चाहिए बिजनेस को, दैट इज द रियली रिक्वायर्ड वन। बिकॉज nowadays we have seen that earlier we used to have market we used to have business on the this thing, फिजिकल ग्राउंड माने शॉप खुली है, फिजिकली कस्टमर आ रहा है, और ऑनलाइन बिजनेस की फिर भी लोगों को बहुत ज्यादा गरज नहीं थी, जैसे मैं कहूँ स्पेशली मेरे तरह के लोगों को, जो कि फिजिकली देख कर प्रोडक्ट परख कर ही खरीदते थे, मेरे तरह के लोग भी थे। बट नाउ मेरी तरह के लोगों को भी चूंकि बाहर नहीं जा सकते हैं, अपने घर में अपनी जगह ही बैठना है, तो people admired now the business on the online platforms. So business को किन किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सक्सेस मिल सकती है, इस कोरोना ने हमको सिखाया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आई टोल्ड यू, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं बिजनेस में या अदर देन बिजनेस हमको सिखाती है। तो ये कोरोना भी बहुत सारे लेसन हमको सिखाएगा और सिखा के जाएगा। ठीक है। सो व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर? नाउ वी कैन कंक्लूड इट। नाउ व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल पर्सन who creates or who brings a new business with a fresh idea or a modification of an old idea, which bears a bit risk also, and a little enjoys the rewards also later on. Okay, so the process of setting up the business and all the things, calculations, that comes under flagship of entrepreneurship, that is known as entrepreneurship. Now the entrepreneur is commonly seen as an innovator most of the times, because he comes with a unique idea. जैसे all of a sudden if I have an idea, नहीं यार मैं तो दूध की डेयरी डालूंगा, so what is big in it? What is big in it? इतने सारे गौशालास हैं, दूध आ रही है, सांची का है, अमूल का है, मदर डेयरी का है, ये है वो है, what is unique in it? Then the person must have a uniqueness, because the idea is old, but a unique flavor of either servicing, a unique flavor of packaging, a unique flavor of taste and quality, से टेस्ट एंड क्वालिटी में ओरिजिनलिटी हो, है ना, या कुछ ऐसी यूनिकनेस हो आपके मिल्क में, या वट एवर यू वांट टू सर्व, या डोर टू डोर सर्विसेज बहुत अच्छी हो, या कोरोना के माहौल में कुछ ऐसी चीज आप लाओ कि आपका प्रोडक्ट बिकने लगे। सो दैट्स व्हाई एंटरप्रेन्योर इज नोन एज इनोवेटर। It always innovates either with a new idea, fresh idea, or with an existing idea, हम कुछ ऐसी नई चीज ले आए जो कस्टमर को ईज करे, उनको कंफर्ट दे, उनको डोर टू डोर मिले, उनके एक आवाज पे आपकी चीज अवेलेबल हो। सो व्हाई ही इज एन इनोवेटर? बिकॉज ही हैज set of ideas available with it. Okay, he has the set of ideas, new ideas towards the goods or the services and the business or its productions. Okay, so this way it is very much required. Okay, now certain key points or takeaways should be there. What we have understood till now: a person who understands the risk of starting a new business and or a venture is known as entrepreneur. We are very clear with this point. And the entrepreneur who creates a firm to realize their idea, known as entrepreneurship. If a person is having some ideas about the goods and services to get distributed, he or she must have this he or she is able to this thing realize that idea or encash that idea or implement that idea, that is known as entrepreneurship, which aggregates the capital and the labor in order to produce goods and services for the earning of the profits. It's not for the social cause. It can be for the social cause also,
The product should be like that. It brings the social cost factor also. It could happen, but it is more on the profit earning rather than the social cost. Now, the entrepreneurship has little risk involved in it, but it also involves the reward altogether. Okay, it also involves the reward. ठीक है? And also serves to generate economic wealth, growth, and innovation. Okay, so this much we have covered till now. Let us see the classification of it. But before classification, let us mm, okay, just a minute. Just a minute. I don't know why it was not catching. Hope this is visible to you. Now, let us see the classification of internship. But before internship, let us uh, again get the concept of entrepreneurship. Entrepreneurship is the ability or the readiness to develop, organize, or run an enterprise, run a business along with its uncertainties, calculated uncertainties, rather, I should say, in order to generate a profit. The most prominent example is the starting of a new business. So this is called concept. This is all about the concept of the entrepreneurship because it plays in economy. If we see, entrepreneurship is connected with land, labor, natural resources, capital, and will generate the huge profit later on. And the entrepreneurial vision, it's a kind of a discovery and risk taking abilities should be there, you know. It also enhances the capacity to get success, for the nation also in an ever changing and most competitive global marketplace. I'm talking about currently. Later on, what it happens, I don't know, but currently it is ever changing and more competitive global market. So starting a new business will we should have better understanding and all the calculations, if at all, as per the current conditions we should do. And now let us understand the characteristics classification of entrepreneurship. We have four types of classification: thus small business enterprise, scalable startup entrepreneurship, and large company entrepreneurship, and social entrepreneurship. Now let us go through it one by one. These businesses are, first one we are talking about the small business entrepreneurship. Small business entrepreneurship: दूध की दुकान, हेयर ड्रेसर, ग्रोसरी शॉप, ट्रेवल एजेंट, कंसल्टेंट, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इस तरह के स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जा रही है. Although this is not small, it looks like very small, but a hairdresser nowadays, if you pick a few people from the market, तीन चार लोग जो बेसिक नाई हो उनको अगर आप मार्केट से उठा लो and give them a best training and put a business of your own and deploy them to do the business, definitely you will get monthly 40 to 50,000 at the start. It's not an issue because everybody needs a hairdresser. uh, Grocery shop, everybody needs grocery material.
Travel agent, yes, it nowadays it is a bit low on the lower side, but otherwise it's a good again a good business. Consultant, that depends upon the field, what from where you are consulting. Carpenter, plumber, electrician, it is very much required. I have seen many shops who writes like har kuch repair, harkuchrepair.com. So what they do exactly, they have the list of the four plumbers, four electricians, four carpenters, four every type of this. So if you want what if that, this is the one junction point, you call them, they'll give you they will call that carpenter or plumber or whosoever you need, and they will put a connection to you कि ये बंदा मेरा आपके पास इतने बजे पहुंच जाएगा और पेमेंट आप मेरे पास ही करोगे। तो वो पूरी उनकी मॉनिटरिंग, उनकी सक्सेस रेट कैसी है उस हिसाब से वो मैनेज करता है। जैसे आजकल होम ट्यूशंस के लिए एक हब होती है कि होम ट्यूशन चाहिए तो हम टीचर देंगे। तो सिमिलरली इस प्लेटफॉर्म पे भी ऐसा होने लगा है। फॉर देम द प्रॉफिट वुड बी एबल टू फीड देयर फैमिली, not making 100 billion business, but yes, by taking this kind of small business loans and from the friends and families, they can run their family and life happily. Then next one is scalable startup entrepreneurship. Now what is that scalable? Scalable जिसकी scale को हम जिसकी मान लीजिए हमने 10 लाख से चालू किया तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। So this startup entrepreneurship starts the business knowing that their vision can change the world even. छोटे से चालू किया और बड़े पे गए। जैसे निरमा वॉशिंग पाउडर था, निरमा वॉशिंग पाउडर एक समय पूरी इंडिया में बिका करता था और आज भी होगा होपफुली, मुझे नहीं पता। बट इट स्टार्ट्स व्हेन आई हैव स्टडीड द स्टडी ऑफ निरमा। तो निरमा के जो ओनर थे वो साइकिल के पीछे कैरियर होता है उसमें एक एक किलो के पैकेट, आधा आधा किलो के पैकेट रख के घर घर में सप्लाई करते थे। बट देन फिर हमने देखा, हम लोग स्पेशली जब छोटे थे, जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज थी उस समय निरमा की जब एड आती थी, वो छोटी सी लड़की जो फ्रॉक पहन के घूमती थी निरमा में एड में, वो उतना बड़ा स्केल हुआ कि पूरी इंडिया में निरमा वॉशिंग पाउडर ही सबसे ज्यादा चलने लगा था एक समय। अभी क्या स्थिति है हम जानते हैं, वो चलता है लेकिन उतना नहीं। तो वो समय समय का फेर भी है, because as I told you, it is ever changing market, and they attract in this way they attract the investors who think and encourage the people who really thinks out of the box. तो इस तरह के बिजनेस जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स को इजिली अट्रैक्ट करते हैं, जो कि something new they are thinking every time, and there is that research focuses on that particular business to make it scalable, to make it scalable, okay, to make it scalable and scalable business. And experimental models also, experimental models can be part of this, can be part of this initially, and later on, say later on, they can hire the best and the brightest employees to whenever they need to enhance the business capacity. But then they require more venture capital to fuel and put their project or business on top. So but due to the investors, they can definitely fuel their business if they are going very good in the past. If their past results are good, definitely they will get these investors, and they can definitely fuel up their business every time. And then comes the third one is large company entrepreneurship. Now large company entrepreneurship means it's a huge company at the initial level itself. It has a certain life cycle also, but most of the companies grow and sustain by offering some new innovative products that involve around the main products. But the change in technology and the customer preferences, the new competition which occurs now, really build a pressure for large companies to create some innovative products and sell to the new and different set of customers in the new market or a targeted market. So to bridge up this with and
to bridge up with the market and customer along with the technological changes. This existing informations really by the really attempts to construct the product internally. So this is basically all about the large company entrepreneurship. Now comes the social entrepreneurship. Now this comes basically focus of producing this product and services that resolves most of the social needs and their motto itself is like to work for the society, not a majority for getting the profits. Yes, they need profits to fuel up the pockets of the employees and certain operating costs they need, but their main motto is not to generate the profit. Their main motive is to running cost उनकी निकलनी चाहिए और उससे पहले बस उनका मेन मकसद होता है कि सोसाइटी के रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफिल कर पाए. Then let us see the characteristics of an entrepreneurship. तो एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सारे एंटरप्रेन्योर तो सक्सेसफुल नहीं है. वी हैव सीन देयर शुड बी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट a real entrepreneur should have, which is going to be a successful entrepreneurship. So first one is ability to take risk. उसमें ability होनी चाहिए risk लेने की. That is there. Innovation की हम बात करें जहाँ तक बात करें तो innovation अगर है इधर प्रोडक्ट में या क्या कहते हैं सर्विसेज में या ट्रांसपोर्ट में या पैकेजिंग में any new idea to to start a business with with vision of earning good profits. तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट है लॉन्चिंग के लिए, लेकिन यहाँ हमने मॉडिफाई उसको किया है एज पर द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. तो the new which is new to the market or the process, so that does the same thing but in a more efficient or economical way, so that comes under innovation. Then comes a visionary and leadership qualities. So if we see कि visionary और leadership quality क्या है, to get successful in business or entrepreneurship, one has a clear vision about its new venture, कि वो उसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं. जैसे धीरू भाई अंबानी का एक क्लियर विजन था कि उनको जीरो से लेके जाना है 100 करोड़ की कंपनी तक, है ना. और 100 करोड़ से फिर आगे का विजन किसने लिया, उनके बेटे मुकेश अंबानी ने. तो इस तरह से एक जो विजनर होता है उसको पता रहता है कि मुझे इस बिजनेस को कितनी दूरी तक लेके जाना है, मेरा विजन कितना है, और and to turn up that idea into reality, what he needs in terms of resources, in terms of employees, it definitely matters कि विजनरी ये सारी चीजें भी इसके बारे में सोचता है कि नहीं. नाउ द लीडरशिप अगेन इज अ क्वालिटी. वन थिंग इज विजन, यू आर क्लियर विद योर विजन, एंड द लीडरशिप क्वालिटी इज लाइक उस विजन को मैं वहां तक कैसे लेके जाऊं जो मेरी इच्छा है. सो दैट कम्स अंडर जो जिसको एग्जीक्यूशन में कहूँ तो वो एग्जीक्यूशन जो है वो दैट इज लीडरशिप क्वालिटी. ठीक है कि लीडर अपने मन की बात को समझा सके, उन तक पहुंचा सके, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज को गाइड कर सके कि जो मैं चाह रहा हूँ उसका वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है. देन कम्स दी ओपन माइंडेडनेस. तो एक बिजनेस में हर पॉइंट पे हम सोच सकते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ अपॉर्चुनिटी टू गेट द बेनिफिट. लाइक पेटीएम is recognize the gravity of demonetization, है ना, and acknowledged it for the online transaction would be more. Initially, Paytm has come up with this. Now it has utilized the situation and expanded it massively during that time, है ना. नोटबंदी के टाइम पे ये आ गया था. देन फोन पे आया, गूगल पे आया, लेकिन सब उसकी देखा देखी है थोड़ा सा लिटिल हायर वर्जन के साथ, थोड़े से यूनिकनेस के साथ, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट था जो वो कौन लाया, वो पेटीएम वाला लाया. सो सिमिलरली देयर आर मेनी एग्जांपल्स अवेलेबल
एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी, तो एंटरप्रेन्योर को फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस के हिसाब से उसको अपने आप को बदलना है. ही और शी शुड नॉट बी दैट मच रिजिड कि ऐसा ही करना है भले यहाँ का वहाँ हो जाए. सो ये अपने आप को कैसे मोल्ड करना है एज पर द सिचुएशन, वन शुड नो दिस. ओके, नाउ और दूसरी चीज, इन अ प्रोडक्ट और सर्विस वट एवर दे आर ऑफरिंग, एंड ठीक है, नो द प्रोडक्ट, नो योर प्रोडक्ट. So company owner must know what I am exactly catering to the market, and you should be available. You should be well known or aware to the latest happenings in the market, which what is exactly essential for the market uh, regarding the available products, services, so as to meet the customers' demand. Okay, so that is the real point, even before starting ideas from scratch. Now let us go through what are the importance of entrepreneurship. Uh, what is the importance of entrepreneurship? What is the importance of entrepreneurship? Okay, entrepreneurship, it's really like creating a new employment. Second one, it has again an innovation which I have discussed before, just in the previous slide. Then it has certain impacts on the society and community development. Then comes the increase of standard of living. Yes, supports research and development. Okay, that is discussed with first, creation of employment. Entrepreneurship generates employment. Whether we are entrepreneur is educated or not. Many of the times we see entrepreneurs are not very well educated, but they have the vision. If they are educated, then it is also good, but it is not sometimes necessary that employer is educated, very well educated, because बड़े बड़े malls हमने देखे हैं, they have the vision, they have the quality, and they have the investments with them, and they know how to cater the customer, and how they know how to handle the employees even, because जो business families से होते हैं, say they know the basics of the business. Normally they used to open a big malls and big market available, a big area in a mall also, and they hire people, they hire the people, they create the employment. So that is really very a good thing, and that is really very much required from the professional education. I mean, the person who has professional education, so they really they should turn up into an entrepreneur. So this is the one of the quality of entrepreneurship, that entrepreneur should generate or entrepreneurship should generate the employment, even at least at the entry level jobs. ये सोसाइटी को और नेशन को खूब हेल्प करता है. Also, that entrepreneurship must have some training modules also for the unskilled training. जैसे मेडिकल शॉप में कोई अगर काम कर रहा है तो 6 महीने उसको ट्रेनिंग दी जाती है. 6 महीने के अंदर ही और शी मस्ट बी नोइंग कौन सी मेडिसिन कहाँ रखी है. सो ट्रेनिंग इज इवन रिक्वायर्ड फॉर अस लाइक इंजीनियर्स ऑल्सो, है ना. इंजीनियर्स को भी इसकी जरूरत होती है. ठीक है, तो है ना. देन कम्स द इनोवेशन. व्हाट इज द हब ऑफ इनोवेशन? दैट प्रोवाइड्स द न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, new ventures available, new technology available, new markets available, new qualities of product available, and also increase the standard of which also increase the standard of living of people. Although we will study that in increase in standard of living in a separate portion. Then comes the impact on society and communication development. So society becomes
really bigger or greater if the employment base is large and diversified, because everyone cannot be fitted into one kind of uniform, no, or one kind of shell, you know. So it brings changes in the society and promotes the facilities available as per the expense pocket size, I can say, on education, uh, many facilities, sanitization, higher level of townships, and entrepreneur has to assist the organizations or run the organization to get more stable and high quality of to provide more stability and high quality of community life. Then comes the increase of standard of living. Now, entrepreneurship has to improve the standard of living of a person by increasing the income, by increasing his income. The standard of living means increase the consumption of goods and services by the consumers for a particular period. And if he earns, or he or she as an entrepreneur earns a good one, then the employees of that entrepreneur will get a good or increased standard of living. So this is its moral responsibility. Now comes the last one, supports research and development. Entrepreneurship has this wing available or inbuilt, that is, he or she has to bring new products, new ideas, new services to be researched, to be searched, to be experimented, to be tested before coming into the market or before putting that product or service into the market. Therefore, entrepreneur has to invest the finance in research and development also. If we are talking about big investors and big research institutes, universities, so as to provide the uh, so as to provide the contribution in the development of the economy, whether it is of society, of district, of state, or sometimes at national level. Okay, so this was the importance of entrepreneurship. Then comes here last one is, what is the difference between entrepreneur and manager? We know what is the difference. Entrepreneur जो होता है बॉस होता है बिजनेस का, और मैनेजर जो होता है वो अपने उस बिजनेस के छोटे से एरिया का बॉस होता है. लेकिन एंटरप्रेन्योर इज फ्री टू थिंक, बट मैनेजर हैज टू थिंक इन अ प्रॉपर डोमेन जो उसको दिया गया है ना. वो उतना ही सोचता है और उसी के बारे में सोचता है, एंड ही हैज अ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस विद हिम. बट एन एंटरप्रेन्योर डजंट हैव इंस्ट्रक्शन विद हिम. इफ ही वांट्स इंस्ट्रक्शन he will give the instruction by himself only, because he is the owner of the company. So the entrepreneur is owner and the manager is an employee. So this is the basic difference. Entrepreneur क्योंकि ओपन है, ओनर है, तो वो रिस्क टेकर है. फाइनेंशियल रिस्क जो है कंपनी की या बिजनेस की वो लेगा, न कि मैनेजर लेगा. मैनेजर को तो एक सेट प्लान के साथ काम दिया जाता है. सो ही विल फोकस टू अ पर्टिकुलर एरिया ओनली, बिकॉज देयर कैन बी more than one manager, so more than two managers under one entrepreneur. Okay, so that is a part of that entrepreneurship. और entrepreneur को एक विजन होता है, एक फोकस होता है कि कैसे आगे स्केल अप करना है, प्रॉफिट्स कैसे गेन करने हैं. मैनेजर डजंट हैव टू थिंक मच. ठीक है. तो जैसा हमने बताया कि अगर डिफरेंस हम देखें, तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो विजनरी होता है, उसको पता है बिजनेस मुझे कहाँ से शुरू करना है और किस रास्ते से कहाँ तक लेके जाना है, और सारी रिस्क उसकी. लेकिन मैनेजर अपनी सैलरी की काम करता है, सब वो रिस्क बेयर नहीं करता. वो सिर्फ जो सेट टारगेट्स हैं रोज के, आवरली, मंथली, वो उसको अचीव करके अपनी सैलरी ड्रॉ करता है. अब नाउ एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक बिजनेस को एक्सपैंड करना, नए बिजनेस सेटअप करना, नए आइडियाज को थॉट करना, नई यूनिक सर्विसेज के बारे में सोचना, कैसे बिजनेस बढ़े, उसके लिए क्या क्या करना पड़े, वो सब एंटरप्रेन्योर सोचता है. लेकिन मैनेजर सोचता है मेरी डेली की जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए, सो एज टू गेट द डेली टारगेट, मंथली टारगेट, ईयरली टारगेट, वट एवर, टू सो एज टू गेट द सैलरीज, incentives, yeah, bonuses, whatever he is receiving against that performance. एंटरप्रेनर जो होता है वो की मोटिवेटर होता है ना, अपने अचीवमेंट्स के द्वारा. एंड जो मैनेजर होता है उसका मोटिवेशन आता है विथ इट्स न्यू पोजीशन
इंक्रीज्ड सैलरी, इंक्रीज्ड इंसेंटिव्स, इंक्रीज्ड जॉब प्रोफाइल, इंक्रीज्ड बोनसेस, इस तरह से उसका मैनेजर का मोटिवेशन आता है। देन रिवॉर्ड जो होते हैं